Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, let's quickly pause the video and open the geography books. Unit number 1, Knowledge 1.7 in your books. So quickly pause the video and open the books. I hope everybody has opened the book. So my dear students, today we are going to study Knowledge 1.7 from our geography books, which states that discover the uses of rocks. So today you will be able to discover the uses of rocks. Before we will discuss the uses of rocks, let's quickly connect it with the previous lectures ताकि एक continuity बन जाए. So my dear students, as we already know that Earth has various layers, 3 layers, and moving towards the crust of the Earth, which is made up of, do you know that? Yes, it is made up of rocks. And you know that on the basis of their formation, rocks has how many types? 3 types: igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. We have already also studied that these rocks can transform. एक rock दूसरे rock में transform हो जाता है, जिसको हम rock cycle कहते हैं. So my dear students, अब अगर हम uses की तरफ आएं, तो rocks जो हैं, इनको different तरीके से use किया जाता है. Let's say about construction. Granite, limestone, sandstone, ये construction में use होते हैं क्योंकि ये strong होते हैं, durable होते हैं. They are used in the making of buildings, roads, bridges, and they are also used in the making of famous monuments. Like आपको स्टैचू ऑफ अमेरिका नजर आ रहा है. इसी तरीके से मार्बल जो है, ये मस्जिद जो आपके इर्द गिर्द आपको नजर आती हैं, उसमें यूज होता है. इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है. क्वार्ट्स और क्ले जो है, ये एक स्टोन है, रॉक है, और ये भी ग्लास प्रोडक्शन में यूज होता है. सिरेमिक्स, जो जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं, ये भी पत्थरों से बने हुए हैं. जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं, ये कोल से प्रोड्यूस की जाती है, और ये भी एक रॉक है. ज्वेलरी मेकिंग के अंदर प्रेशियस रॉक्स को यूज किया जाता है, जैसे कि एमरल्ड्स, डायमंड्स एंड रूबीज, और इससे बड़ी ही खूबसूरत किस्म की ज्वेलरी जो है उसको बनाया जाता है, और खवातीन उसको बहुत शौक से पहनती हैं. इसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि लाइमस्टोन से ड्राइव किया जाता है, इसको एक डाइटरी सप्लीमेंट के अंदर यूज किया जाता है, जो कि स्टमक के लिए यूज होता है. सॉल्ट, जो कि सबको पता है, ये मेडिसिन, ब्लीचेस, सोप्स और फूड्स में यूज किया जाता है. फूड प्रिजर्वेशन में भी इसको यूज किया जाता है. कैल्शियम कार्बोनेट अगेन, जो कि लाइमस्टोन से ड्राइव किया गया है, इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स लाइक टूथपेस्ट और स्किन केयर में भी यूज किया जाता है. सो आपके टूथपेस्ट में भी रॉक मौजूद है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका जो टेबल सॉल्ट है, ये भी यूज होता है किस चीज में? खानों के अंदर. मुख्तलिफ खाने जो हैं, उनमें आप नमक इस्तेमाल करते हैं और अपने खानों को मजेदार बनाते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम तो डेली बेसिस पे बहुत सारे रॉक्स जो हैं, वी आर यूजिंग देम. सो नाउ दैट यू हैव डिस्कवर्ड द डिफरेंट यूजेस ऑफ रॉक्स, व्हाट यू नीड टू डू इज pause the video and you will complete this worksheet. Teachers can provide the worksheet in the print form, or you can get it from the description box below this video. So pause the video and finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now my dear students, you will finish the note down the homework for today. So for the homework, you will do skill 1.1. that now you know the different uses of rocks. You will analyze the importance and uses of rocks. The skill is given on page number 14. You will scan the QR code and you will complete the skill sheet there. And then there is activity 8 given on page number 8. That will be your homework. You will also finish that. And if you want to practice any questions, MCQs, short questions, you can scan the QR code given at the end of unit number 1 with the exercise, and you can practice as much questions as you want. So my students, after this homework, let's quickly have a conclusion and summarize today's lecture. आज के lecture में हमने क्या पढ़ा है? We have studied that rocks play a vital role in the various aspects of human life. ये हमारी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं. जिस ग्लास में आप पानी पीते हैं, इवन वो भी रॉक से, क्वार्ट्स और क्ले से बना हुआ है. इवन इसको रॉक्स को हेल्थ केयर में, एस्थेटिक्स में
और मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। देयर डाइवर्स प्रॉपर्टीज मेक देम इंडिस्पेंसिबल रिसोर्सेज फॉर आवर सिविलाइजेशन। सो रॉक्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हैं और ये हमारी बहुत सी चीजों में इस्तेमाल होते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर। कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।